all of you, my dear. Let's start the another important chapter. This is also called electrical wiring part 2. इलेक्ट्रिकल वायरिंग पार्ट 2 चैप्टर आम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 टू 25 क्वेश्चन आम डिस्कशन करवा जोटा इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एहीपरि भावे क्वेश्चन सब आसीपे टर्मिनल 2 फास्ट इलेक्ट्रिकल वायरिंग 1 रे आम ऑलरेडी 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कशन करछे इलेक्ट्रिकल पार्ट 2 रे आम रिमेनिंग क्वेश्चन 25 कि 28 क्वेश्चन भाई डिस्कशन करवा ठीक है the purpose of bedding आमे जो bedding यूज करछे to protect the metallic sheath suppose metallic sheath ये होची केबल बाके metallic sheath जो bedding यूज करछे ये bedding के काम कोन what the purpose of the bedding ए the corrosion effect कमा पई corrosion मतलब junk रू हटेया पई कि mechanical injury करिया पई both this is both corrosion भी हटेबा और mechanical injury की रक्षा करिया पई आमे bedding करछो ठीक है देन को मेटालिक सीट जो बेड ऊपर गोटे चदर पर जो रखुचे केबल ऊपर लगोचे दिस इज बोथ पर्पज भाई क्वेश्चन नंबर 2 ड्यू टू द ट्रायंगुलर शेप ऑफ द एचएसओ केबल the weight of the thermal resistance the weight of thermal resistance is also the weight of the thermal resistance is also reduces this is also reduces ठीक है क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर 52 the triangular shape ऐड कले तो कौन होगा से रिड्यूस हो जाए दिस इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूसेस ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन यूरिका वायर इको यूरिका वायर सब क्वेश्चन में दिस इज आल 60% copper and the 40% nickel this is यूरिका वायर is a 40% copper and 40% nickel ठीक है निक्रम वायर दिस is 820 ratio this is 80% nickel and 20% chromium 5 the cable which are used for the above 22 kV the above 22 kV it has the above this underground cable this is extra high voltage cable EHT extra high voltage cable ठीक है क्लियर से वोल्टेज अप टू 650 voltage up to 6 feet this is the medium voltage up to 6 feet this is also called medium voltage up to 1000 volt ठीक है similarly in the office building रे wiring color life wiring color का red हम यूज कर red is life wire हम को red यूज कर red RYB red yellow and blue ए तीनटा भितर जे कोनोसी गोटी यूज करबा लेकिन मैक्सिमम प्रेफर करछे red ठीक है by standard wire gauge the diameter of wire standard gauge रे wire diameter केते what diameter of wire this is also called this is 32 that is 32 square wire gauge 32 square wire gauge ठीक है then question number 9 which above which voltage level suspension type of the insulator use suspension type insulator suspension type insulator this is 9 question number 9 above which voltage level suspense ଆମେ यूज करछु मैक्सिमम 400 kV बाय गोटे इंसुलेशन डिस्क जो सस्पेंस टाइप रो गोटे डिस्क दिस इज आल्सो 11 kV ठीक है 11 kV गोटे सस्पेंस गोटे इंसुलेटर डिस्क गोटे डिस्क होची 11 kV डिजाइन तो नेचुरल आमे above which voltage level माने 400 voltage level तक आमे यूज कर दिस इज आल्सो सस्पेंस टाइप इंसुलेटर 11 शॉर्ट सर्किट इज डिफाइंड एज द शॉर्ट सर्किट मतलब the short circuit defined as short circuit में this is high current flow short circuit है मतलब बेसिक ज्यादा करंट फ्लो होला ठीक है देन हो गया where is fuse current the electrical circuit हमें फ्यूज कोड कनेक्शन करे टू द लाइव सहित हमें कनेक्शन करे टू द लाइव वायर सहित ये लाइव वायर सहित सीरीज कनेक्शन करू दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्यूज विल कनेक्ट हमेशा लाइव पर दिस इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है इन कंट्रोल सर्किट व्हिच टाइप ऑफ द फ्यूज इज प्रिफर कंट्रोल सर्किट हमें कार्ट्रिज फ्यूज यूज कर दिस cartridge fuse you can use in the control circuit ठीक है the main cause of the firing electrical cable the main cause of the firing in electrical cable main cause firing करो low fuse rating overloading loose connection all of this is question number 30 the important question सब प्रकार firing electrical cable loose connection हेले भी हबो low fuse rating हेले भी हबो so do all of the reason of the firing question also the material used for the fuse having the low melting point and high specific resistance this is a very important question very important question number this is also called your question number 14 very important low melting point and high specific resistance low melting point and high specific resistance this is a very घोषी मन रखो question number 15 the charcoal and salt हम जो charcoal and salt use
एर्थिंग आम जो चारकोल सॉल्ट दौचु कमाई दौचे इंक्रीज द सॉइल कंडक्टिविटी इंक्रीज हाँपाई इंक्रीज द सॉइल कंडक्टिविटी इंक्रीज हाँपाई आम यूज करछु बा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिक्रीज हाँपाई आम यूज करछु ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 16 द स्टैंडर्ड साइज ऑफ GI इलेक्ट्रोड यूज इन एर्थिंग इज नेचुरली आम जो सामान बा स्टैंडर्ड साइज यूज कर एर्थिंग रे आम कौ प्रकार साइज यूज दिस इज 30 mm 38 mm into 1 38 this is also called 38 into 1.5 mm size this is standard size this is also called a standard size dia 30 mm dia 1.5 meter length this is called the standard size of the galvanized iron electrode earthing जो हमें this is a very important question ठीक है। then question number 17 a cable has an insulation relative permeability WR is also called 2 if the insulation replaced by the one of the relative permittivity 4 यदि insulation relative permittivity 4 कर दो तो what the capacitance of the cable C equal to epsilon 0 epsilon R A upon D this is the formula then what happen so the capacitance if the cable is also double ठीक है clear then question number 18 sheath is used सी जो हमें यूज करछु केबल रे जो हमें शीथ यूज करछु कमाई द प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द केबल को स्ट्रेंथ करे बा प्रोवाइड प्रॉपर इंसुलेशन प्रिवेंट मॉइस्चर प्रिवेंट चेंज द रस्ट द स्टैंडर्ड ए प्रोवाइड द मेटालिक स्ट्रेंथ बा स्ट्रेंथ ऑफ द केबल शीथ मेटालिक शीथ जो हम यूज करछु इज कैन प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द केबल ठीक है। then question number 19 this a wire is placed on the top of the transmission line top of the transmission line हम use करछु a wire is placed top of the transmission line this is also called your this is ground wire this is also called a ground wire ऊपर जो होगा this is ground wire ठीक है। question number 20 the conductor by means of which of the metal body at an equipment or application is connected to the earth is also known as the neutral this is also earth continuity conductor this is also called earth continuity conductor ठीक है clear। question number 21 which insulation is the most widely used for the covering wires cables used in internal wiring आमे को प्रकार insulation use करछु for the internal wiring you can use the PVC you can internal wiring you can use PVC this is also the important question ठीक है this is general IQ question all are the IQ question ठीक है। question number 20 which of the following type of the wiring prefer for the workshop lighting के लिए हमें को प्रकार यूज करछु वायरिंग वर्कशॉप लाइटिंग के लिए हमें कंसील कंडक्ट टाइप ऑफ वायरिंग हम यूज करछु वर्कशॉप लाइटिंग पाइन ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 23 द एर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड विद इन द व्हाट डिस्टेंस इन मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग हुज इंस्टॉल्ड सिस्टम इज बीइंग अर्थ जदि दीरा सिस्टम जी द एर्थिंग इलेक्ट्रोड दीरा भितर केते डिस्टेंस रे व्हाट द रिमेन इट दिस इज आल्सो 1.5 मीटर 1.5 meter distance रहवा निहात का this is also the important question of 24 the supplier fuses which is provided in domestic wiring system after the energy meter पर the supply fuse after the energy meter पर not before energy meter ठीक है। तो आज पर the recommendation of the ISI Indian Standard organized Indian Standard inspection the maximum number the point of the light of the fan or the socket outlet that is connected to one sub circuit मन रख one sub circuit con different sub circuit माध्यम रे आमे ताको कनेक्शन करि पारे वायरिंग करि पारे जदि मोर देन 800 वाट हला जदि मोर देन 800 वाट हला द कंज्यूमिंग पावर इज मोर देन 800 वाट और 10 पॉइंट को गोटे सब सर्किट यूज करियो वन सब सर्किट फॉर द 10 पॉइंट मैक्सिमम 10 पॉइंट ठीक है वन सर ठीक है। इन ए थ्री प्लग सिस्टम तीन प्लग वाला रे कोन अछि ना तीन टा पिन थाउची ऑल द थ्री पिन्स आर सेम साइज टू पिन्स आर द सेम साइज दीटा पिन सेम साइज और गोटे पिन जो एर्थिंग पिन वन इज थिकर टिके मोटा भी हबो और टिके लंबा भी हेतियो सो दिस इज आल्सो एर्थिंग पॉइंट ठीक है क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 27 द एसेट वैल्यू ऑफ द ग्राउंडिंग the asset grounding resist domestic application this is very important question सब वाले क्वेश्चन ए परी क्वेश्चन माने आसे this is question number 27 the ground resistor maximum to 1 ohm or less than 1 ohm रहे बा 1.2 1.3 ऐसे रहे this is maximum 1 to 1.5 नहीं तो less than 1 ohm ठीक है। then question number 28 inside the earth pit the earthing electrode should be placed the earthing load should be placed by the vertically this is vertically ही place not horizontally
not at angle of 45 degree, this all are the vertical, ठीक है। so this पार्ट 2 रे आमे 28 प्रकार 28 टा क्वेश्चन डिस्कशन कले। पार्ट 1 रे आमे करथले 50 टा क्वेश्चन 50 टा ऊपर क्वेश्चन आमे डिस्कशन कले। जदि एई परि मान क्वेश्चन जदि आपण देखियो चाहछिन ताले यू कैन टेक आवर कोर्स दिस 777 777 टंका रे ये कोर्स अवेलेबल मिलुची। यू कैन गो टू द लिंक, तळे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हैची, यू कैन गो टू द लिंक